Hello everyone, in this video I will solve a question from the chapter integrals which is in the form of px plus q root over ax square plus bx plus c. This problem will help you to understand how to solve this type of questions. To solve this type of questions we have a formula. So the formula is basically px plus q equals to a into derivative of ax square plus bx plus c plus b. So we will apply this formula. So formula is basically px plus q equals to a into derivative of ax square plus bx plus c plus b. So this is the formula for the type of integration. Okay, for this type of integration. So whenever the integral is in this type, we have to apply this formula. So in this function, px plus q is basically a linear, ax square plus bx plus c is a quadratic function. Okay, so the formula is basically this linear function equals to constant a into derivative of the quadratic function under the root. ठीक है, root का जो भी quadratic function है that will come here and plus b. So we have to apply this formula in this question. So apply करने पर क्या आ जाएगा? Apply करने पर आएगा 3x minus 2 equals to constant a derivative of this quadratic function. Derivative of this quadratic function which is x square plus x plus 1 plus constant b. Okay, so this is the formula apply कर लिए. Next we have to find this constant a and b. Before that यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे. So डिफरेंशिएशन करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? So a into derivative of x square is 2x, derivative of x is 1 and derivative 1 is which is constant is 0. So 2x plus 1 will be the derivative of x square plus x plus 1. So let's say this is this equation as equation number 1. Now इस इक्वेशन के हेल्प से मेरे को a and b पता करना है. पता करके इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है. To find a and b, we will equate the coefficient of x and we will equate constant. To equate coefficient of x, we will multiply this a inside the bracket. So ये क्या बन जाएगा? 2ax plus a plus b. Left hand side में 3x minus 2. So we will equate coefficient of x. On left hand side, coefficient of x is 3. On right hand side, coefficient of x is 2a. So 3 will be equal to 2a. So by equating coefficient of x, I get this equation 3 equals to 2a. By equating constant, I will get minus 2 equals to a plus b. So the equation I get is minus 2 equals to a plus b. Now what we will do, we will find the value of a. From first equation, I can find a is equals to 3 by 2. We will put this 3 by 2 in the second equation. And from here I can find b. So b will be equal to minus 2 minus 3 by 2. So minus 2 minus 3 by 2 will be minus 7 by 2. So this is the value of a and value of b. Okay. Now what we will do, we will put the value of a and b in this equation number 1. So the equation will become 3x minus 2 equals to a, which is 3 by 2 into 2x plus 1 plus b, which is minus 7 by 2. So after putting the value of a and b, I get this equation. Now what we have to do, we have to substitute this value in place of 3x minus 2 in the integral. So our integral was basically integration of 3x minus 2 root over x square plus x plus 1 is equals to, अब substitute करना है, we have to substitute this in place of 3x minus 2. So after substituting, I will get 3 by 2 into 2x plus 1 minus 7 by 2. So I have substituted this in place of 3x minus 2. And the remaining x square plus x plus 1 will be there. Now let's say this integral is I. So I will assume this as I. And here 3 by 2 into 2x plus 1 minus 7 by 2 root over x square plus x plus 1. Now what I will do, I will multiply this root over x square plus x plus 1 inside with this first term and with this second term. Then I will get I equals to integration of 3 by 2 2x plus 1 into root over x square plus x plus 1
minus integration of 7 by 2 into root over x square plus x plus 1. So I have multiplied this with this both the term, and I have applied the integration on the both term. Okay, so I get this equation. Now we will take the constant outside of the integration, that means 3 by 2. So I will get 2x plus 1 into root over x square plus x plus 1 minus 7 by 2 integration of root over x square plus x plus 1. So I will get this. Now let's say this integral is I1 and let's say this integral is I2. So I will assume this as I1 minus, and I will assume this second integral as I2. Okay, this is I1. I've considered this as I1 and I've considered this as I2. Now we will solve I1 and I2 separately. I1 is basically integration of 2x plus 1 into root over x square plus x plus 1. We have to solve this. And how will we solve this? To solve this integral, we have to use substitution method. Let's say t is equals to x square plus x plus 1. We have considered t is equals to x square plus x plus 1. From here I can differentiate this equation. I will get 2x plus 1. Derivative of x square is 2x and derivative of x is 1. Now क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर I will get dt equals to 2x plus 1 into dx. Now I will substitute dt in place of this and I will substitute t in place of x square plus x plus 1. So I1 integration will become root over t into dt, क्योंकि इसके जगह पे हम t पुट कर दिया and 2x plus 1 into dx की जगह पे हम dt पुट कर लिया. Now we have to solve this equation. I can write this root t as t power 1 by 2. I can write in this form. Now we have to apply the formula. So formula is basically integration of x power n. The formula for integration of x power n is x power n plus 1 divided by n plus 1. We have to apply this formula in this I1 integration. On applying the formula, I will get t power 1 by 2 plus 1 divided by 1 by 2 plus 1 and plus c1. c1 is the constant for the integration I1. Now 1 by 2 plus 1 is 3 by 2. Okay, so I will write it directly as 3 by 2. Now denominator में 3 by 2 है, ये basically बन जाएगा 2 by 3. 3 by 2 will become 2 by 3 because 3 by 2 is in the denominator of t power 3 by 2. Now we have to substitute the value of t. T is basically x square plus x plus 1. So I1 is integration of, sorry, not integration, I1 is 2 by 3. The value of t is x square plus x plus 1 whole power 3 by 2 plus c1. So this is the solution of the integral I1. Now we have to solve I2. And what is I2? I2 is basically integral of root over x square plus x plus 1. So let me write I2. I2 is integration of root over x square plus x plus 1. Now to solve this integral, we have to use completing the square method, and we have to apply the completing the square method in this quadratic equation. So quadratic equation is x square plus x plus 1. So x square, here I can multiply 2 and I can divide 2. तो हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिए, बट ऐसा हम क्यों किया? क्योंकि मेरे को यहाँ पे 2 चाहिए. फॉर्मूला में 2 है. फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला में 2 है? फॉर्मूला इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो ये फॉर्मूला में यहाँ पे 2 है. सो आई नीड 2 हियर, यहाँ पे 2 चाहिए. सो फॉर दैट यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई कर लिया एंड डिवाइड कर लिया. नाउ बाई कंपेयरिंग आई कैन से दिस इज ए स्क्वायर. सो x इज a. सो हियर x इज a एंड दिस इज, ये जो 2 है ये क्या है? फॉर्मूला का 2 है. सो रिमेनिंग जो 1 by 2 है वो क्या है? b है. सो आई विल ऐड 1 by 2 स्क्वायर. नाउ ये जो फॉर्म है ये किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में आ गया. बट ये बैलेंस्ड आउट नहीं है, सो वी हैव टू बैलेंस दिस आउट. सो यहाँ पे हम क्या किया? हम एक्स्ट्रा ऐड किया. सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 minus 2 स्क्वायर and here remaining 1 was there, so we have to write that one also. Now
वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने पर क्या बन जाएगा, 1x प्लस 1/2 होल स्क्वायर बन जाएगा ये, एंड यहाँ पे -1/4 प्लस 1 है। -1/4 प्लस 1 कितना होगा, 3/4 होगा। So I can rewrite this as 3/4. 1 minus 1/4 is 3/4. Now we have to substitute this in our integration. So we will substitute that here. So I2 will become basically integration of root over x plus 1/2 square plus 3/4. So I can write 3/4 as root 3/2 whole square. हम इसको ऐसा भी लिख सकता। So again we will use substitution method to solve this integration. So we will assume t equals to x plus 1/2. And from here I can find dt by dx, मतलब derivative of t with respect to x, that will be 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1, 1/2 is the constant, उसका डेरिवेटिव होगा 0. So 1 derivative of x is 1, derivative 1/2 is 0, 1 plus 0 is 1, that is why dt by dx is 1. From here I can find dt equals to dx. Now on substituting everything I will get root over t square plus root 3/2 whole square. I will get this. Now we will apply formula. So formula is basically, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। इसका फॉर्मूला होता है x/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना है। सो दिस इज फंक्शन ऑफ टी एंड दिस फंक्शन ऑफ एक्स, बस टी की जगह एक्स की जगह टी आ जाएगा एंड ए का वैल्यू पुट कर लेना है। सो I2 विल बिकम बेसिकली t/2 रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 3/4 प्लस ए स्क्वायर मतलब 3/4 डिवाइड बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट ओवर, एक्स नहीं आएगा, टी आएगा, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 3/4 plus c. So I have to substitute the value of t, which is x plus 1/2. So x plus 1/2 divided by 2 root over x plus 1/2 whole square plus 3/4 plus 3/2 divided by 2 will be 3/8 log x plus 1/2 plus root over x plus 1/2 whole square plus 3/4 plus c2. So constant of the integration I2 is c2. Now what we have to do, we have to again substitute x square plus x plus 1 in place of this. ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने पर क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट करने पर आएगा एंड वी कैन मल्टीप्लाई दिस, वी कैन ऐड दिस। इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, सो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 1, सो 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 2, सो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेसिकली 4 बन जाएगा। सो आई विल राइट डायरेक्टली एज 4 इंटीग्रेशन ऑफ, इसके जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करना था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 सब्स्टिट्यूट कर लिए, प्लस 3/8 लॉग एक्स प्लस 1/2 प्लस रूट ओवर, अगेन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है ये, एंड प्लस c2। ये था I2 का सोल्यूशन। ठीक है, अब I2 का सोल्यूशन को एंड I1 का सोल्यूशन को I के इक्वेशन में पुट करना है। सो लेट्स, ये है I, सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है सब कुछ। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूट करने पर क्या बन जाएगा, I इक्वल्स टू 3/2 I1 बस बेसिकली 2/3 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 7/2। I2 क्या था, let me put a bracket, so I2 was basically 2x plus 1 divided by 4 root over x square plus x plus 1 plus 3/8 log x plus 1/2 plus root over x square plus x plus 1 bracket close plus c.
ठीक है, यहाँ पे हम c लिख दिया। कैसे हम c लिख दिया? सो वहाँ पे c1 था, यहाँ पे c2 था, एंड उसके सामने कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी था। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके ऐड करके एक नया कांस्टेंट मिलेगा मेरे को। सो लेट्स से दैट कांस्टेंट इज c, इसलिए हम डायरेक्टली c लिख दिए यहाँ पे। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 7/2 इनसाइड द ब्रैकेट, एंड वी कैन कैंसिल दिस 3/2 एंड 2/3, सो रिमेनिंग कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे। सो आई विल बी बेसिकली इक्वल्स टू रूट ओवर x² प्लस x+1 माइनस 7/2 अंदर मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा, एंड न्यूमरेटर में 7 इंटू 2x+1 बन जाएगा इंटू रूट ओवर x² प्लस x+1। 7/2 मल्टीप्लाई करने पर कितना बन जाएगा? 21/16 बन जाएगा। यहाँ पे माइनस भी है, सो माइनस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो माइनस 21/16 लॉग मॉडुलस x+1/2 प्लस रूट ओवर x² प्लस x+1 प्लस c। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन फॉर द गिवन इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक ये हुआ है, यहाँ पे रूट नहीं आएगा, ये रूट नहीं आएगा, क्योंकि I1 का जो सोल्यूशन था, सो लेट मी शो यू। सो I1 का जो सोल्यूशन था वो था 2/3 x² प्लस x+1 पावर 3/2, ये था I1 का सोल्यूशन। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक कर लिया है। यहाँ पे बेसिकली ये रूट नहीं आएगा, ये जो रूट है ये रूट नहीं आएगा। ठीक है, पावर 3/2 आएगा। सो लेट मी इरेज दैट एंड लेट मी रीराइट एज पावर 3/2। सो यहाँ पे आएगा पावर 3/2। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, this is the final solution for the given integral. Okay, if you want to see more videos, then please consider subscribing the channel. Thank you for watching this video.